First of all, I would like to know about the stream or what kind of examinations you are just preparing. हमें ये मुझे पता होगा तो हम बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि that is most of the students are from banking for the purpose of banking SSC. Most of this. Okay. Okay. So I'm Rajeev Yadav and I'm working in an institute, a government institute, and have experience of teaching in English for competitive purposes for a long time, especially for the purpose of NDA, CDS, and other one-day examinations. And at that time, I was in Allahabad. So not only preparation, but even there was some time when just we have gone through the preparation, especially the civil services or the things which are related with the academic literature or academic writing. So first of all, basically, because the things which has been allotted today, that is parts of speech, and most of you will be aware of this situation or the idea what is the parts of speech. Normally, we read any sentence and we explain it. We just get information from that sentences. But the thing is that, why you're laughing? नहीं नहीं बताइए, हम लोग भी हंसते हैं. नहीं, nothing. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो देयर आर समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. In each and every sentence, these sentences are formed and framed by some words, some letters, and some sentences and some clauses, and those kind of things are known as parts of speech. Okay, so we should read a paragraph. हम एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं कि what is parts of speech, because it should be conversational, it should be practical, it should be much more interactive. That is the problem. मैं थोड़ा दूर से आया हूँ और इसलिए हो सकता है अभी स्वेटिंग हो रही है, इसलिए आप लोग हंस रहे हैं. कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम भी नॉर्मल हो जाएंगे, आप भी नॉर्मल हो जाएंगे, है ना. कैमरा सही है कि नहीं? सही है. ठीक. So we'll start with the paragraph. Obviously, in these times, we have gone through a concept called UCC. All of you must be aware of this fact, UCC. So there are a lot of articles written on UCC. And what is UCC? Uniform Civil Code. And what is the basic idea of this UCC? Huh? What is the basic idea of this UCC? Is it, do you feel, is it appropriate for the country, or it will create havoc in the country? It will create some kind of problem. Okay, so on that issue, there is an article in front line. I'm just going through this article, some paragraph of that article, and we'll try to find out. Yes. अच्छा, हिंदी भी यूज कर रहे हैं. अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में भी बात कर रहा हूँ. ठीक है, हिंदी में बात कर रहा हूँ. हम जब बात करते हैं अंग्रेजी साहित्य की या अंग्रेजी भाषा की, तो हम उसमें देखते हैं कि बहुत सारे शब्दों की बनावट से कोई भी भाषा का निर्माण होता है. ठीक है, तो जैसे इंग्लिश में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश में वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाने जाते हैं. उन पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप जानते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन. दीज आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हिच फ्रेम इंग्लिश लैंग्वेज. हम and in your examinations, basically competitive examinations, some what is the idea that some sentences will be given and you have to find the error of that particular sentence. कि वो वाक्य कहाँ है जहां पे आपको एरर दिख रही है इन रिगार्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूजेस पर
क्वेश्चंस किए जाते हैं कि जब हम उनको यूज करते हैं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। और यू हैव गॉन थ्रू द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, हाँ आपने देखा होगा उसको। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस में भी आप जानते हैं कि देर आर सम चेंजेस इन प्रोनाउंस, इन वर्ब्स। बेसिकली आप जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्टली जब स्टडी करते हैं तो हम दो ही चीजों का चेंज करते हैं, वर्ब का और प्रोनाउंस का, है ना। नाउन चेंज नहीं होता है, वर्ब्स चेंज होते हैं, प्रोनाउंस चेंज होते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक आइडिया, व्हिच काइंड ऑफ चेंज डू यू फील व्हेन वी चेंज एनी डायरेक्ट सेंटेंस इनटू अ इनडायरेक्ट सेंटेंस, कि हम जब चेंज करते हैं तो क्या उसमें करते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस पैराग्राफ, एक पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी का है तो इसलिए अंग्रेजी के ही पैराग्राफ को लूंगा। वैसे मैं हिंदी भी आपको पढ़ा सकता हूँ, पर बेसिकली हम लोग इंग्लिश एक पेपर है आपका, एक पोर्शन है जिसको आपको डील करना है। सो द पैराग्राफ, जस्ट बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली। The proposal for the introduction of a uniform civil code in the country has raised concerns among tribal and ethnic communities across India, with the leaders of many tribal bodies in the Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand and elsewhere issuing statements in the protest. This is the sentence. Should write it. First you should write. All of you should write it. Write down this sentence. Write down. The proposal for the introduction, the proposal for the introduction of a uniform civil code, फिर से मैं बोल रहा हूं, the proposal for the introduction of a uniform civil code, yes, in the country has raised, R-A-I-S-E-D, raised concerns among tribal and ethnic communities across India, with the leaders of many tribal bodies, with the leaders of many tribal bodies, of the leader of many tribal bodies in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand and elsewhere, E-L-S-E-W-H-E-R-E, elsewhere, issuing statements in protest. This is the sentence. Elsewhere, issue करना, जारी करना, निर्गत करना, issuing statements in protest. This is the sentence. Read it carefully and try to find out each word from which parts of speech it belongs to. Take us some time and read it and try to find out each and every word from which parts of speech it belongs to. फिर से sentence बोलो. The proposal for the introduction of a uniform civil code in the country has raised, R-A-I-S-E-D, raised concerns, C-O-N-C-E-R-N-S, concerns among tribal and ethnic communities across India, with the leaders of many tribal bodies in Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand and elsewhere, issuing statements in protest. There is a word across.
Which parts of speech it is? We'll start with the parts of speech, but first of all, I must know from where I should start. That is why I'm asking. Sure? Across? Which parts of speech it is? I'm asking about, आपसे पूछ रहा हूँ. नोट नहीं किया क्या आपने? अच्छा, लग रहा था आप नोट नहीं कर रहे हैं. Across preposition. Sure. Okay. Anyone else? Across preposition. Elsewhere. Elsewhere. Conjunction. Okay. Among. For. Tribal. Sure. Noun. I requested to him. Sorry, he requested to him. I made a request to him. Is there any difference in parts of speech? Both word is requested and request. What is basic difference? क्या नहीं दिख रहा? He requested to him. I made a request to him. Is there any difference of parts of speech in these words, requested and request? Is there any difference? What? Yes. That is the, and this is the thing which you have to understand. Basically, I want to make you aware there are some many parts of speech are used in such manner that sometimes they are one and another time they are another. So by the users, by understanding the users, proper understanding of the users of these words, we can recognize the errors and we can recognize the basic things which are going to ask in examination. So हम लोग वहां से शुरू करते हैं and we'll start with the noun and its uses. हम noun से शुरू करते हैं और किस तरीके से sentences आते हैं और उनका framing कैसे होते हैं और किस तरीके से उनके uses को आप recognize कर सकते हैं, पहचान सकते हैं. ठीक है. So as all of you are aware of this term noun is a name of person, place or thing and normally they are called naming words. उन्हें क्या कहा जाता है? नेमिंग वर्ड्स. उन्हें संबोधनकारी शब्द कहा जाता है जिसमें कुछ नाम दिया जाता है किसी को. तो ऐसे शब्दों को हम बेसिकली क्या नाम से जानते हैं? नाउन्स के नाम से जानते हैं. एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट दे आर ऑफ 5 काइंड्स. वो 5 प्रकार के होते हैं एंड स्पेशली द लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रेफरेंस विद द कॉम्पिटिशन. नॉट हाँ, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कॉम्पिटिशन के पर्पज से बहुत सारे जो फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं या बहुत सारे जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो किससे रिलेटेड होंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड है. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? Abstract noun is a noun which denotes quality and which cannot be considered it as concrete form. We cannot find it as a concrete form. आप concrete form में उसको नहीं recognize कर सकते हैं. That is emotion, that is related with our feelings, that is related with some innate idea. जो ऐसा विचार जिसको हम आप देख नहीं सकते हैं उनको हम noun, abstract noun की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक है. जैसे नॉन भी बहुत सारे पार्ट हैं. जैसे फॉर एग्जांपल द वर्ड सोशल सिक्योरिटी, बहुत सारे वर्ड्स में आप यूज करते हैं. ऑनेस्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी दे आर ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज. बेसिकली वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. सो फ्रॉम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, देन मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
दे सुनने में बहुत ही सहज सरल और सिंपल से लगते हैं, बट जब हम उसको बड़े सेंटेंसेस में यूज देखते हैं जहां पर क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये एक्चुअली यूटिलाइजेशन क्या है, उनका यूज क्या है, किस तरीके से उसमें एरर होती हैं, गलतियां होती हैं। हम लोग उस एरर की बात करेंगे, क्योंकि नॉर्मली इंग्लिश का जो परसेप्शन है वो ये है कि आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हैं, तो बहुत ही कई बार बहुत ही चीजें बहुत ही सिंपल से लगती हैं। बट आप बैंकिंग के पेपर में खासकर देखिए, एनडीए सीडीएस के पेपर में देखिए, सिविल यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर्स को देखिए, तो आप पाएंगे कि पूरे पैराग्राफ आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। हैव यू गॉन थ्रू? कभी आप लोगों ने देखा पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो कंप्रहेंशन पेपर्स आते हैं, उसके पैसेजेस आते हैं, आपको लगेगा कि आप पूरा कवर नहीं कर पा रहे हैं, इतने डिफिकल्ट वो पॉलिसी मेकिंग जो डॉक्यूमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उनके पार्ट्स होते हैं, या फिर कोई बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस है किसी चीज की पॉलिसी की, उसके पेपर्स होते हैं। तो इसलिए क्या है कि यू हैव टू डेवलप योर स्किल टू रीड एज सुन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू फाइंड आउट द बेसिक पैटर्न which has been included by the writer. राइटर ने किस तरीके से उसको अपने पैटर्न को डिजाइन किया है, उस डिजाइन को समझने की जरूरत होती है। एंड हाउ यू कैन डेवलप? जस्ट रीड एज मच एज पॉसिबल। दैट इज नॉट ओनली, मतलब इंग्लिश जो आप पढ़ रहे हैं, ये केवल इस बात के लिए जरूरी नहीं कि आपके पेपर में आ रहा है, इस बात के लिए भी आ रहा है कि इट कैन इंप्रूव योर पर्सनैलिटी। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, because you are going to have interview, you are going to have lot of after services or in services, you will find that you have to face many meetings, you have to face many officers, so you have to answer as soon as possible. You can design your thought. How? Read as much as possible. That is why literature is always necessary. Literature directly आपके फायदेमंद नहीं है, but it is going to make your personality different from what you are before this reading or after reading. So that is more important. That is why my concentration on this fact that not only we will discuss about this part of speech or comprehension portion or vocabulary portion. Lot of things are there, and you can there are a lot of things which you have to remember, but lot of things are which can be included in your daily way thinking. That is more important. जस्ट आई थिंक सभी लोगों ने ज्यादातर आपको बताया होगा कि आप मैगजीन्स पढ़िए, और मैगजीन्स को जितनी तेजी से पढ़ पाएंगे उतनी तेजी से आपके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। सो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन, एंड बेसिकली एज यू नो दैट वी हैव 5 kinds of nouns, and on that basis of that noun their uses, we'll discuss one noun and then we'll discuss pronoun, and after discussing these two topics we'll have some questions and find out the way how we can handle it. ठीक है, तब हम उसको सोचेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि पेपर को कैसे हैंडल किया जा सकता है। तो हम लोग नाउन को डिटेल से पढ़ाने के पहले मैं आपको बता दूं, जैसे प्रॉपर, दैट इज फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। इन is any what is difference between proper and common noun? What is basic difference between proper and common noun? For example, river, river, river. If there is word river, okay. Mountain, okay. Cold drink, cold drink. Why? That is why. So proper noun is very simple way. If it is a specialized name of anything, that is proper noun. And if it denotes its gender or its group in which that particular thing is belong, or the thing which cover many other proper nouns, they are called common noun. Common noun is a noun which covers many names of proper noun. ठीक है, जो बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करता है, that is known as common noun. So sometimes the uses of these two kind of nouns are asked.
ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस आप फ्रेम करेंगे जहां देखेंगे बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चंस आए होंगे जो प्रॉपर और कॉमन नाउन के एनालिसिस पर बेस्ड होंगे। हम लोग उस पेपर को डील करेंगे। देयर आर सम पेपर्स ऑफ एसएससी एंड बैंकिंग, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट दैट इज टू थिंग which you have to initiate in the beginning of understanding noun. Then we have there are a lot of doubt about collective noun. Collective noun, sometimes it is misunderstood with the common noun. What is collective noun? Collective noun, yes. हाँ, ग्रुप कैसे, जैसे दैट इज ग्रुप, हम कहते हैं गर्ल्स भी, गर्ल्स बॉयज। हाँ नहीं, ये है कलेक्टिव नाउन है। Any word which denotes the group in its meaning, that is the thing. ये हमेशा ध्यान रखिए। that is what is collective noun. Collective noun is a noun which in itself, which in its meaning denotes some collection or some group. किसी एक, that is basic difference between common noun and collective noun. Collective noun is a word which in its meaning has collection, has group. Army, army, that is when we say army, it ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत सारे लोगों की बात करें। when we say class, but class is also common word, common noun, and class is also collective noun. For example, when we say that I have taken class, here it means collective noun. But when we say that is a class of ethnic group, is more relevant at this present time, ठीक है, then that class is common noun. ठीक है, वहां वो एक विशेष ग्रुप के लोगों को दिखा रहा है जो कलेक्शन नहीं है बल्कि वो आइडेंटिफिकेशन है, उसका आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन के बीच फाइंड आउट कर सकते हैं आप। एंड द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Abstract noun are those kind of nouns which talk about emotion, feeling, and they cannot be present in concrete manner. कोई concrete manner में present नहीं किए जा सकते हैं. That is the thing. For example, that is we have gone through this paragraph. जिस paragraph को हम लोगों ने discuss किया था, इसमें बहुत सारे words जो हैं वो क्या हैं, abstract noun हैं. That is communities is a, what is collective noun? Communities, that is collective noun. India is what? Sure. That is bodies, tribal bodies in Chhattisgarh. Proper noun. ठीक है, यहाँ bodies does not mean the physical body. Bodies means the institute. The institute, ठीक है, उस इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज करते हैं। ये आपको सेंटेंस पढ़ते समय आपको समझना है, और ज्यादा जितनी तेजी से आप पढ़ पाएंगे सेंटेंसेस, उसकी मीनिंग को आप उतने बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट नाउन. हम लोग यूजेस पे और बात करेंगे, इसके जो और एरर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे. बट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रोनाउन. प्रोनाउन, व्हाट इज प्रोनाउन? What is pronoun? Normally it is defined that pronoun is a word which is used in the place of noun. So they are called replacement words. They are called replacement word, as noun are called naming words. In the same manner, pronouns are called replacement words because they replace, they are used in the replacement of noun. That is why they are called pronouns. Pro before and noun. Noun के before मतलब in place of. In place of noun. So normally noun, most of the errors in any sentence are in verb, then preposition, and on the third place there is pronoun. ज्यादातर जब आप कंपटीशन में आपकी पेपर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ज्यादा जो मिस्टेक एरर्स फाइंडिंग के सेंटेंसेस होंगे, या फिर आप देखेंगे जिनका जो इंटरचेंजेबल क्वेश्चंस होंगे, उनमें सब में क्या होगा, आपका ज्यादातर मिस्टेक तीन चीजों में दिखाई पड़ेगी. वो सबसे ज्यादा होता है वर्ब में,
and then after we find preposition mein. And the third one, that is pronoun. So the pronoun should be very clear, because in direct, indirect speeches, even direct, active passive wise, I think all of you have gone through this active passive wise. उसको चेंज इंटरचेंज करना आपको आता होगा, उसको आपने सीखा होगा. तो वहां बहुत सारे सबसे ज्यादा चेंज किस में आता है? प्रोनाउंस में चेंज आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस में. क्या बोर हो रहे हैं क्या आप लोग? नींद आ रही है? नहीं, बी एक्टिव. चाय वाय भी मतलब कुछ रखा करिए. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड. So that is pronoun, and the first pronoun which we discussed, that is personal pronoun, and you have gone through a chart: subjective case, then objective case, and the third one is relative case. ठीक है? That is, you have gone through a chart of pronouns. Pronouns का एक चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आप लोगों को इंटरमीडिएट में पढ़ाया गया होगा, बताया गया होगा. उस चार्ट को, क्योंकि उसके यूज डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूजेस पर आप देखते हैं, है ना? दैट इज द राइट डाउन प्रोनाउन, एंड दैट इज वन पर्सनल pronouns, and that one, and first one is subjective, first person, that is called first person. That is objective case. Sorry, यहाँ लिखा जाएगा objective case, first person, subjective case, subjective and objective, and then relative case. First person, all of you are aware of this fact: I, we, and basically IV. And then objective case, me or my? Me. That is relative case, my. And there is another case which is pro relative, that is mine. And their uses is different. Can you tell any sentence by using the word this mine? हाँ, लास्ट में आपका, उसके बाद नहीं, आपसे पहले हाँ, यस. माइन यूज करके कोई सेंटेंस. हैव यू गॉन थ्रू दिस? माइन, योर्स, हर्स. दिस. सो द प्लेसमेंट इज चेंज. ठीक है, उसके प्लेसमेंट में चेंज हो जाता है. दैट इज व्हाट इट इज समटाइम्स इज कॉल्ड pro-relative pronouns. They are called pro-relative pronouns. इनके uses के उस पे डिपेंड करता है. And then we, us, and us. That is second person, you. And that is your and yours. तो आप लोग इसको देख चुके होंगे. And the third one, third person, that is he, then him, his, and both his. She, her, and hers. And then they, them, and their, and theirs. Okay, and the last one, it. Last one, that is the word which is used for the
न्यूट्रल वर्ड्स के लिए यूज किया जाता है, वो इट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, ये हो सकता है आप लोगों को बहुत सिंपल से चीजें लग रही होंगी और लगी रही होंगी क्योंकि आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं बहुत सारी चीजें, बट जब इनके यूज पर आएंगे द प्रॉब्लम कम्स देयर। जब हम के यूजेस को डील करेंगे, देखेंगे, तो हम बात करेंगे। तो दैट इज द फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन। Is it clear? Then lot of other pronouns are there. For example, that is a reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? When in these relative pronouns self is used, then that is called, they are used in two ways. One is, क्या हुआ भाई, क्लास पसंद नहीं आ रही क्या? Okay. Then it is called two-way. That is, first one is reflexive pronoun, and then we have also some demonstrative pronouns. क्या हुआ, नहीं क्लास क्लियर हो रही क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा, मैं केवल, अच्छा इसलिए हाँ, इंग्लिश है इसलिए ज्यादातर इंग्लिश में ही होगा ना। अच्छा ठीक, कोई इशू नहीं, विल मैनेज इट। आपको भी जाना है? जाइए। किसको किसको जाना है? चला जाए भाई, जाइए, सब लोग जाइए, जाइए जाइए। आपको भी जाना है? और किसी को जाना है? लाइव है क्लास, ये लाइव है, ठीक है। और बेसिकली वी आर नॉट फोर्स टू टेक क्लासेस, वी आर वेल ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूट, नो इश्यू एट ऑल, है ना। लॉट ऑफ जो कोचिंग में आके पढ़ाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खराब वाली कंडीशन बनेगी, बट फॉर अस दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम। बट because initially all many of things you know, that is why initially it seems to be very boring, or sometimes it seems we have gone through सारी चीजों से। अभी मैं पेपर स्टार्ट करूंगा तब आपको लगेगा कि हाँ, these are the things which should be learned, and this is my experience of 20 years of teaching. You can't imagine that I'm teaching for 20 years, and especially in Allahabad for civil services and NDA CDS classes, no issue. The thing is that you can learn from anything, from anywhere, है ना, बहुत सारी, but must have some patience. This is my first class for you, and all of you are also of first time studying to me, so that is not the issue. Just have a patience, have a patience, then we'll come through a proper way and find some method to learn a lot of things. बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। Can, okay. Then we have one is reflexive pronoun, and reflexive pronoun are those kind of pronoun जिनमें हम self लगा के, इस relative pronoun के में self लगा के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और but it becomes different on the basis of its use in sentence. When it is used as object, then it is reflexive. For example, I wrote this letter to myself, then it is reflexive. And when it is used just after that is subject, just after that is noun, then that it becomes what? It becomes demonstrative, ठीक है। तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जाना जाता है, जो हमें आपको समझने की जरूरत है, उस जानने की जरूरत है, ठीक। there are other pronouns which have to be understood, जिसे हमें समझना है, that is कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहे तो नोट कर लें, नोट डाउन, नोट ही कराता हूं, वो ज्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, राइट डाउन। ठीक, ओके, that is reflexive. And then interrogative pronouns. Interrogative pronouns. Interrogative pronouns are those kind of pronouns. Interrogative pronouns are those kind of pronouns which are used to raise the question. To raise the question, जहां प्रश्न पूछने के लिए जो जो हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनाउन कैसे होते हैं? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, प्रश्न सूचक प्रोनाउन होते हैं। प्रश्न सूचक प्रोनाउंस होते हैं जो प्रश्न पूछने के लिए आप यूज करते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि आप उन प्रश्न पूछे जाते हैं एंड देयर आर सम सरप्राइज क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड थ्रू दोज इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। उनके थ्रू भी हम सरप्राइजिंग क्वेश्चंस भी पुट अप करते हैं एंड देन इट बिकम्स एक्सक्लेमेटरी आइडियाज। ठीक है, व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस सीन इज। सो वहां पर क्या हो जाएगा, व्हाट इंटरोगेटिव नहीं है, वो फिर क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी थॉट हो जाता है। देन वी हैव possessive pronouns. These they are also known as possessive pronouns. ठीक है, इनका इस्तेमाल हम possessive pronoun के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। Then we have reciprocal pronoun. Reciprocal. There is a word called reciprocal. What is reciprocal? Recipro, one another, each other. These are pronouns which are called reciprocal pronouns. जहां एक दूसरे या दो थॉट या दो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, वो एक दूसरे को दिखाने के लिए, तब वहां पर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, सो दैट इज रेसिप्रोकल, ईच अदर, वन एंड अदर। Then we have demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns, this, that, there, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउंस के नाम से जाने जाते हैं। एंड देयर आर अनदर वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको देखने से, जैसे समथिंग, एनीथिंग, दे आर indefinite pronouns. They are indefinite pronouns and many errors you find in the use of these indefinite pronouns. बहुत सारे आप उसमें मिस्टेक्स पाएंगे, एरर्स पाएंगे, जो वहां पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये these are the basic concept related with pronouns. And you have any पेपर है आपका कोई, आपके पास बैंकिंग का या फिर एसएससी का, आपके पास मॉडल पेपर हो तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उसको, इन दो टॉपिक्स को लेकर। This paper of SSC. टाइमिंग क्या है आपकी क्लास की? अच्छा, ठीक ठीक है, इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सॉरी, इतना ही टाइमिंग है ना, 12:35। आप लोग अब वैसे ही वो हो गए हैं, हम इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे आगे, वर्ब और प्रीपोजिशन के
जो क्लासेस होंगी उसमें हम लोग इसको बेहतर मैनेज करेंगे। ठीक है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है आप लोगों को पढ़ाने का और आपको भी, तो हम लोग आगे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। 1:40 तक है? अच्छा, मुझे ही लगा कि 12:45 तक ही है। अच्छा ठीक, चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये 12:45 ही बताया गया था। मोबाइल में कॉम्प्रिहेंशन, राइट डाउन अ पैराग्राफ, राइट डाउन। क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन, क्लीन इंडिया मिशन is one of the most blank part and popular missions to have taken popular missions to have taken place in India, place in India. This mission includes a reward, includes a reward to a state in a city and a city, reward to a state and a city. This encourages every citizen, every citizen to keep the surroundings clean. Surroundings clean. This cleanliness campaign was blank, इसके बाद blank, हाँ, this cleanliness campaign was dash by Indian government to the national level, Indian government at the national level, blank part, blank word, all the rural towns and urban cities. इसमें फर्स्ट एक क्वेश्चन आप पुट अप किया गया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 2.
अगर आप सेंटेंस नोट किए हैं तो उसमें ब्लैंक नंबर 2 जो है, जहां हिस्सा बताया गया है, उसमें क्या वर्ड यूज करेंगे, उसमें ऑप्शंस दिए हैं। पहला है अनऑर्गेनाइज्ड, डोमिनेटेड, रिहर्स्ड, गवर्न। अनऑर्गेनाइज्ड, dominated, rehearse, and govern. Question. Unorganized, dominated, rehearse, and govern. Last one. हाँ, dash वन टू के लिए मैं बोल रहा हूँ, टू जो टू है उसके लिए। दिस क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज, इसके बाद क्या आएगा? गवर्न। ये किस टेंस में है सेंटेंस? पास। किसका पैसिव वाइज? एक्टिव वाइज बनाइए सेंटेंस का, इस सेंटेंस का एक्टिव वाइज बनाइए। हाँ, द क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज गवर्न बाय इंडियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। इसका एक्टिव वाइज बनाइए, क्या बनेगा? क्लीनलीनेस कैंपेन एट द नेशनल लेवल, एंड दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पार्डन? हाँ, एक्टिवाइज में ना, एक्टिवाइज, इसका एक्टिवाइज क्या हो जाएगा? हाँ, इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है ये, पैसिवाइज में आपका बना हुआ है, और इसका एक्टिवाइज क्या हो जाएगा? द इंडियन गवर्नमेंट गवर्न दिस क्लीनलीनेस कैंपेन एट द नेशनल लेवल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूज हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से किया गया है। नाउ वी आर लास्ट में नहीं, पढ़िए पढ़िए क्या है। हम्म the yes, select the most appropriate option to fill in the blank number 3, and options are preventing, excluding, restraining, encompassing। encompassing, so इसका ऑप्शन क्या होगा? encompassing, covering, encompass, that is covering everything। ठीक है, कवरिंग या इनकम्पासिंग ऑल सिटीज एंड द स्टेट्स। हाँ, तो इनकम्पासिंग जो ऑप्शन वहां पर क्या हो जाएगा? इनकम्पासिंग। इनकम्पासिंग टू कवर एवरीथिंग, उस किसी चीज को देखना, कवर करना। फॉर एग्जाम्पल दैट इज नॉर्मली यू हैव गॉन, जैसे यहाँ पर वर्ड है दैट इज इनकम्पासिंग। इन encompassing. In parts of speech, what kind of this word is? In parts of speech, what kind of this word is? Encompassing. नहीं, कवरिंग वर्ड है ही नहीं, ऑप्शन दिया ही नहीं, बताए तो। इनकम्पासिंग, रिस्ट्रेनिंग और बहुत सारे हैं, लेकिन इनकम्पासिंग वर्ड है इसका। ऑप्शंस में इनकम्पासिंग दिया हुआ है, ठीक है, कवरिंग नहीं दिया हुआ है। कवरिंग होता तो भी होता, और इनकम्पासिंग का भी मतलब वही होता है बेसिकली। इनकम्पासिंग, टोटल कवर। ठीक, ये बताइए पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकम्पासिंग वर्ड क्या है? पार्डन? कौन बोल रहा है? तेज बोलिए। हाँ बोले। वर्ब, ओके। और have you gone through the jiran? Have you gone through
Infinitive. I think you have gone the participle. You have gone through the participle. What is participle? Verb. A different use of a verb is called in a different manner. That is called participle. So there are three other very important part of verb which should be cared while just going through the uses of verb. That is gerund, infinitives, and this participle. Participle of three kinds. There are three kinds of participle. One is simple, second is present participle, and past participle. Okay. So when we say this word is a kind of gerund, here it has been used as gerund. So option आपसे पूछा जा सकता है कि that is the find out in passing what kind of this parts of speech is. या option दे देंगे आपसे infinitive. Yes. Gerund basically is a kind of verb when it is used as before verb first form, and then there is use of to, then it is used as that is gerund. ठीक है? Oh sorry, हाँ that is किसके पहले, हाँ ठीक है. In that is there are two basically use, that is gerund, then infinitives, and then participle. Basically participle. Gerund when it is used as verbs first form and ing form, that is called gerund basically. Okay. And infinitive that is the verb's first form and its use of to before verb, that is called infinitive. And the participle is basically used on the basis of its purpose. Basically that is verb plus ing form, that is participle, but sometimes it is having and verb first third form, perfect participle. When there is a having plus verbs third form, then it becomes perfect participle. Having said, I obeyed his commands. ठीक है? Then that is basically that is जब मैं यह कहकर, मैंने ये कहा और इस चीज को फॉलो किया, then there is a gap between two thoughts, two ideas, then there is use of perfect participle. ठीक है? And if there is no gap between two actions, two events, then there is use of present participle. Being a student, I studied in the class. So स्टूडेंट होने और क्लास पढ़ने में कोई गैप नहीं होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. इज इट क्लियर? If two events are there and participles are used to combine those events, and if the events have no gap, then there is use of simple participle, present participle. और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का में आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है. और अगर परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या किया जाएगा आपका, उसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा. और एक पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल यूज हो जाते हैं, एंड इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव. आई सेट ऑन broken chair. ठीक है, I sat on broken chair. Then here the word broken is not a main verb. It is not a main verb. Main verb is set. ठीक है. So
broken is past participle and it is used as an adjective, तब ये विशेषण बन जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा कि दैट इज दिस सेंटेंस इज गिवन एंड ब्रोकन इज which kind of part of speech? Options will be given: noun, pronoun, adjective, or verb. Then this word will be adjective. ये विशेषण की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। And that being a student, I continued my classes. ठीक है, तो यहाँ being क्या है? This is present participle. दो घटनाओं को जोड़ रहा है, मैं एक विद्यार्थी हूं, और दूसरा जोड़ रहा है मैं क्लास में पढ़ता हूं। तो दोनों घटनाओं में कोई डिफरेंस नहीं है, ज्यादा गैप नहीं है। तो ऐसे जोड़ने के लिए हम दोनों इस्तेमाल किसका करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे, और आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे और दूसरे हिस्से को हम नॉर्मली यूज कर लेंगे। तो बीइंग अ स्टूडेंट आई कंटिन्यूड माय क्लासेस, ऐसे यूज करेंगे। एंड लास्ट वन हैविंग, जब दोनों घटनाओं में गैप हो, ज्यादा गैप हो, तो वहां पे क्या किया जाएगा? वहां पर परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाएगा और हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो पहली इवेंट की जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे मैं अपने मित्र से मिला और मैंने घर जाके उसकी तारीफ की। एक बात है कि मैं अपने मित्र से मिला, मैंने घर जाके उसकी तारीफ की। ये दो हिस्से हैं, दो सेंटेंसेस हैं। अब इसको जब कनेक्ट करना होगा तो इसको जोड़ना होगा, और जोड़कर क्या कैसे सेंटेंसेस बनेंगे? इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये किसके यूज के बारे में बात कर रहे हैं? हम लोग वर्ब के यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो वहां पर क्या होगा? हैविंग मेट माई फ्रेंड एक हिस्सा हो गया, आई प्रेज्ड हिम एट माई हाउस। तो दोनों घटनाओं में गैप है, अंतर है, ज्यादा मैं उससे मिला और घर जाके उसकी कभी तारीफ की होगी। तो फिर दोनों जब इवेंट ऐसे हों तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ज्यादा गैप होता है तो हम वहां परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। तो पार्टिसिपल तीन तरीके के होते हैं। वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, और बेसिकली ये सिचुएशन पे बेस्ड है कि कब इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अगर नॉर्मल दोनों घटनाओं में कोई गैप नहीं है तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे सीधा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करके, और अगर गैप है दोनों इवेंट के बीच तो आप हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एंड देन इट बिकम perfect participle. And the past participle is what? Past participle is the use of verb's third form as an adjective. ठीक है, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको विशेषण की तरह इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल का यूज है। और जीरेंट का बेसिकली वर्ब में आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं, और तब हम इसका इस्तेमाल करके बना लेते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है? जब वर्ब में टू का इस्तेमाल करके बनाया जाता है तो हम इस्तेमाल, इट डिपेंड्स ऑन द यूज, इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, टू डू एक्सरसाइज इज हेल्दी फॉर द बॉडी। तो टू, यहाँ वर्ब, एक्सरसाइज इज मेन वर्ब, और इसके आगे हमने टू प्रीपोजिशन लगाया, दोनों एक साथ हो गए, तब इसका अर्थ क्या हो गया? एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, ऐसे भी हो जाए। लेकिन अगर ये टू बीच में आ जाए, टू एंड वर्ब, जैसे आई वेंट टू द मार्केट टू बाय बुक्स, तो वो भी क्या है? वो भी जीरंड है, वहां भी जीरंड है, लेकिन उसका अर्थ क्या हो जाएगा तब? के लिए। तब उसका अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए। तो यहाँ पर वो जीरंड दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वाक्य की शुरुआत में अगर वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो भी, और वाक्य के बीच में कनेक्टिंग प्रीपोजिशन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा या कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो भी वो जीरंड, इंफिनिटिव। यस, डिफरेंस है आईएनजी का और टू का। अगर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो वो इंफिनिटिव हो गया। अगर जीरेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है और वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट की तरह हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, गेटिंग रिड ऑफ समथिंग इज वेरी
एसेंशियल टू कंटिन्यू स्टडी, किसी से मुक्ति पाना, ना आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर देंगे। एक्सरसाइजिंग इज हेल्दी फॉर द बॉडी, तो वहां पर क्या है, एक्सरसाइजिंग एंड टू एक्सरसाइज। ठीक है, सेंटेंस आगे का है कि टू एक्सरसाइज इज हेल्दी फॉर बॉडी, तो ये हो गया इंफिनिटिव। एंड एक्सरसाइजिंग ing is healthy to body, then it becomes gerund। ठीक है, ये दोनों में इतना ये डिफरेंस है gerund और इंफिनिटिव का इस्तेमाल में। gerund, हाँ हाँ ठीक, ये क्लियर है। ठीक, gerund, infinitive and participle, and they are a kind of verb basically, and they are called basically, for example, you have also studied the modal auxiliary verbs। Modal auxiliary verbs, they are supportive verbs, they are called supportive verbs or connecting verbs। ये कनेक्ट करने के लिए होते हैं दो सेंटेंसेस को और दो क्लॉजेस को, तो दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ब्स, जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और नॉर्मली आप वर्ब्स के यूज को कई बार आप पढ़ते हैं, जैसे ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज होते हैं, और इंफिनिटिव एक्टिव पैसिव वाइज में यूज करते हैं, आप इंटरचेंज में यूज करते हैं, आप कंजंक्शन के यूज में, जैसे फॉर यूज ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन की यूज में भी आप लोग इसको यूज करते हैं। कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज कंजंक्शन एंड व्हाट इज प्रीपोजिशन, व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन? और कंजंक्शन, हाँ हाँ वो भी जोड़ता है। टू सेंटेंस एंड प्रीपोजिशन, normally two words are connected, then that is preposition, but it does not change the meaning. And what is conjunction? Conjunction is a connecting word which connects two clauses, two sentences, and changes the meaning of the sentence। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि दैट इज प्रीपोजिशन क्या करता है, वो दो हिस्सों को तो जोड़ देता है, कई बार क्लॉजेस को भी जोड़ता है, लेकिन वो मीनिंग को नहीं चेंज करता है, सेंटेंस के फ्रेम को चेंज नहीं करता, उसकी डिजाइन को चेंज नहीं करता। लेकिन कंजंक्शन क्या होता है, उसकी डिजाइन को भी चेंज कर देता है। कंजंक्शन is a word which connects two parts, two clauses and two sentences into one and make them different sentence rather than its previous design। इसकी previous design से बिल्कुल अलग बना देता है। And on the basis of use of conjunctions, there are two types of sentences, one is complex and other is compound। When subordinative conjunctions are used to connect two clauses, then they are called complex sentences, and when there is coordinative conjunctions and they are used to connect two parts or two clauses, they are called compound sentences। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का यूज उस पे किस पे डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। तो कंजंक्शंस के दो ही पार्ट में आपको पढ़ना है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो क्या है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन? सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या है? Coordinative, okay, subordinative conjunctions are basically a kind of prepositions used to connect broader part of any sentence। ठीक है, broader part of sentences को जोड़ने के लिए जब यूज करते हैं, वो kind एक वो कई तरीके से होते हैं। they are sometimes they are preposition, they are sometimes they are pronouns, but used to connect two parts, then they become कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। फॉर एग्जांपल दैट का इस्तेमाल बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है,
हम वेदर का इस्तेमाल बहुत कॉमनली यूज करते हैं। दैट या वेदर का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। आपने देखा होगा दैट इज जब इनडायरेक्ट सेंटेंस आप डिजाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारा हिस्सा क्या करते हैं आप दैट और वेदर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। याद होगा आपको, जब की के रिलेशन में बात करते हैं तो आप वहां पर दैट या वेदर का इस्तेमाल करके बनाते हैं। सो वेदर एंड दैट आर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस, ठीक है, वो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस हैं। उसके अलावा बहुत सारे और वर्ड हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। दीज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर आल्सो subordinative conjunctions. For example, one sentence, I met a boy on the road, he was my friend. These two sentences are there. You have to connect it in a complex sentence. Then what happens? I have met a boy on the road who was my friend. So then who is what? Who is subordinative conjunctions? मैं एक लड़के से रोड पर मिला, एक हिस्सा है, ये एक सेंटेंस है, दूसरा है वह मेरा मित्र था। दोनों सेंटेंस का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन जब हमने जोड़ा तो उसमें क्या हो गया, मैं एक लड़के से मिला जो मेरा मित्र था, तो मीनिंग बदल गई सेंटेंस की। तो वो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से किसका यूज हो गया, कंजंक्शन का यूज हो जाता है। और वहां पे क्या लगा, जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज है वो कौन है, हु है, ठीक है। I have said something, yes. नहीं, मीनिंग से मतलब है दोनों अलग अलग सेंटेंसेस की मीनिंग अलग अलग है ना, वो दोनों में एक बातें नहीं है, एक बातें नहीं है दोनों में, है ना, एक बातें नहीं है। लेकिन जब दोनों को जोड़कर हम यूज करते हैं तो उसकी मीनिंग बदल जाती है। मीनिंग का मतलब पूरा उसका फंडामेंटल मीनिंग नहीं बदलेगी, लेकिन सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से मीनिंग बदल जाती है। लेकिन प्रीपोजिशन में बिल्कुल नहीं बदलती है, प्रीपोजिशन में कहीं नहीं बदलती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। व्हाट इज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन? There are four kind of coordinative conjunctions on the basis of their nature. If they connect common similar sentences, they are called accumulative coordinative conjunctions. जैसे and, both, as well as, not but नहीं, but is not, as well as, they are accumulative coordinative conjunctions to frame compound sentences because they connect two similar meaning or similar thoughtful sentences. They are called accumulative coordinative conjunctions. ठीक है, for example, that is I went to the market, I bought mini box. तो दो साथ चलने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ना है, तो हमने क्या किया, I went to the market and I, नॉट, दोबारा I का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, bought, हाँ, तो आई है, अगर दूसरा कोई प्रोनाउन होता तो हम वहां इस्तेमाल कर लेते हैं। सो जो दो एक सिमिलर जैसी मीनिंग का यूज करके हम बनाते हैं, तो वहां पर आई वेंट टू द मार्केट एज वेल एज आई विजिटेड सिनेमा हॉल, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो एज वेल एज का इस्तेमाल करके या एंड का इस्तेमाल करके जो सिमिलर मीनिंग सेंटेंसेस होते हैं उनका इस्तेमाल करके जब बनाते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं, अक्युमुलेटिव कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। और ऐसे कंजंक्शन से क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है। अब जो एडवर्सरी सेंटेंसेस होंगे, जस्ट अपोजिट सेंटेंसेस होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एडवाइज, जब बिल्कुल डिफरेंट होंगे तो दे आर कॉल्ड एडवर्सरी कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। जैसे बट, ठीक है, he is rich but he is miser, he is meritorious in study but he is not able to express his, yes. So जब बिल्कुल अपोजिट बातें कह के हम जब इस्तेमाल करते हैं
तो वहां पर क्या होता है, दे आर कॉल्ड एडवर्सरी कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, और ऐसे से इस तरह के कंजंक्शन से हम कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं. एंड नेक्स्ट थर्ड वन, दैट इज इलेटिव. व्हेन वी गिव रीजंस, जब हम कोई तर्क देते हैं, कारण देते हैं, कारण बता के जब हम कोई बात कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जाइए, जब हम कारण बताते हैं, क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं. आई थिंक यू आर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन. नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इट हैपेंस. That is elative. When we give reasons of anything, then that is use of that particular so because, ठीक है, therefore, hence, these are the words which are used as elative coordinative conjunctions. They are those kind of words which are used as elative coordinative conjunctions to frame compound sentences. And the last one that is very important, when we connect two sentences which are just similar but seems to be advisory to each other, seems to be just opposite to each other, then the use of those conjunctions are called extra adversary conjunctions. ये भी क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंसेस फ्रेम करने के लिए बनाए जाते हैं. सो ये कंजंक्शंस के यूज पर है. अब डिपेंड करता है कि किस मोड में आपके क्वेश्चंस पेपर्स आते हैं, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे उस चीज को, जब क्वेश्चंस पेपर को मैं देख लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे. they are subordinative conjunctions normally somewhat although is coordinative conjunction. although का इस्तेमाल जब हम just seems to be opposite sentences का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे दो और although and दो as का इस्तेमाल कर, या दो then का इस्तेमाल करके बनाते हैं, तो भी हम लोग वहां पे conjunctions का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. अब प्रीपोजिशन की यूज को आपको याद करना पड़ेगा. बहुत सारी चीजें हैं प्रीपोजिशंस के जो यूजेस हैं, उनको हमें आप सबको याद करना है, लेकिन हम फिर भी उस पर हम लोग एक डिस्कस करेंगे और फिर उसके बारे में बात करेंगे. और कुछ आप लोगों को फिलहाल पूछना हो? दोनों का यूज अलग अलग होता है और दोनों के स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में अंतर होता है. उसको क्या, कोई उदाहरण दीजिए आप, कोई रीजन. देयर इज अ वर्ड येट, YET. ये क्या है, प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है? येट, YET कैसे, कहाँ यूज होता है? पास्ट परफेक्ट में, और उसके अलावा नहीं यूज होगा? पास्ट परफेक्ट नहीं, ऐसा तो नहीं. ठीक है. और आपको कुछ पूछना हो अभी? यू हैव बीन स्टूडेंट ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज, of which subject? नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग जो मॉडल पेपर्स हैं, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो हम लोग उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू. book for that purpose, okay, you can buy a book called that is Arihant publication की, for Arihant publication की जो composition है, grammar and composition, वो आप ले सकते हैं. but for basic purposes you must have two books, very important two books, How to Write Correct English and How to Translate Correctly by R.P. Sinha.
You must get it by R.P. Sinha. By R.P. Sinha. These are very core books. That is how to translate correctly and how to write correct English by R.P. Sinha. And you can buy for competitive purposes. You can buy Arihant Publications book, Grammar and Composition, and टाटा मैग्रा हिल की ग्रामर की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं टाटा मैग्रा हिल के नाम से, टीएमएच के नाम से आप लेंगे, उससे मांगेंगे टीएमएच के नाम से तो ले सकते हैं। बट बेसिकली अगर इनिशिएट करने के पर्पज से आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वाकई, तो आपको यू मस्ट गेट दीज टू बुक्स, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश एंड हाउ टू ट्रांसलेट करेक्टली बाय आरपी सिन्हा। ये बहुत ही रिलेवेंट बुक है और बहुत ही सिखाने वाली बुक्स हैं। तो इन दोनों बुक्स को आप जरूर साथ में रखें और रेगुलर लाइफ में और यूज में, बोलने में, इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस सिखाए गए हैं जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर की बुक में आप उसका ट्रांसलेशन नहीं आपको मिलता है। तो इन दोनों बुक्स में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश एंड हाउ टू ट्रांसलेट करेक्टली। अरहंत पब्लिकेशंस बुक ग्रामर एंड कंपोजिशन एंड टाटा मैग्रा हिल्स दैट इज इंग्लिश ग्रामर। और इसके अलावा और हाँ, बहुत सारे जो अनसॉल्व पेपर्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।